In my last video, we understood what rag is. Retrieve first, then generate. So हमने बताया था कि rag है क्या, पहले retrieve करो, then generate करो. But the biggest confusion is rag actually documents के अंदर से correct answer find कैसे करता है. So today I will explain three most important concept of rag: chunking, embeddings and vector database. तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये चंकिंग, एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस है क्या. कोई कोड यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये तीनों चीज़ होती क्या है आखिर. रैग मीन्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. इट मीन्स बिफोर आंसरिंग द सिस्टम फर्स्ट सर्चेस योर डॉक्यूमेंट्स. मतलब पहले रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढो, देन आंसर जनरेट करो. रैग इज यूज्ड बिकॉज नॉर्मल एलएलएम कभी कभी कॉन्फिडेंट बट रॉन्ग आंसर दे देता था. So let's start with chunking. In real life, documents are big, like PDF, policies, knowledge base, articles. So we cannot send the full documents to LLM every time. It will be slow and expensive. So we break the documents into small parts. This is called chunking. मतलब एक बड़ा documents को छोटे छोटे pieces में तोड़ना. The small pieces are called chunks. For example, like you have a 20-page HR policy or PDF. So chunking will break it into many small pieces or like paragraphs. Now when user asks a question, system can find only the relevant chunk, not the full PDF. So chunking is important because retrieval works better when your chunks are clean. Now comes embeddings. Embedding means converting text into numbers in such a way that meaning is preserved. मतलब उसका मीनिंग खराब ना हो, मतलब टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना बट स्मार्टली. सो सिमिलर मीनिंग का टेक्स्ट क्लोज रहते हैं बिकॉज कंप्यूटर के लिए टेक्स्ट डायरेक्टली कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है बट नंबर कंपेयर करना ईजी होता है. सो थिंक लाइक दिस: इफ टू सेंटेंस हैव सिमिलर मीनिंग, देयर एम्बेडिंग्स विल बी क्लोज. लीव पॉलिसीज एंड हॉलीडे रूल्स दोनों का मीनिंग सिमिलर है, सो एम्बेडिंग्स भी क्लोज होंगे. सो एम्बेडिंग्स हेल्प द सिस्टम डू मीनिंग बेस्ड सर्च, नॉट जस्ट keyword search. Now we have chunks and we have embeddings, but we need a place to store them. The place is called a vector database. मतलब vector database is a database optimized for storing embeddings and doing similarity search. It stores chunk text, chunk embeddings, metadata like file name, page name, etc. So when user ask a question, system questions का embeddings बनाता है and then vector database से closest chunk निकालता है. Now the most important part: how does retrieval happen? User questions comes, we convert that questions into embeddings. Now we compare it with all chunk embeddings inside a vector database. The closest chunk are selected. This is called similarity search. So it's look like Google search but smarter. Google searches keywords. Vector search searches meaning. So now let's connect everything. Step 1, you upload the document. Step 2, documents are broken into chunks. Step 3, each chunk is converted into embeddings. Step 4, embeddings store into vector database. When user asks questions, so step 5 will happen. Questions embeddings is created. Step 6 is vector database finds top relevant chunks. And step 7 is those chunks are sent to LLM with the question. And our last step is LLM generates final answer. That is why RAG is basically search plus answer. Now the honest thing, RAG can still fail. Yes, if chunking is poor, retrieval will be poor. If embeddings are not good, similarity search will be bad. If documents are outdated, answer will also be outdated. So the quality of your retrieval decide the quality of your answer. So today we understood the backbone of RAG: chunking, embeddings and vector database. Thanks for watching.